अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चुलबुल रिएक्शंस। सो गाइज आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो जाकिर नाइक का एक बहुत खूबसूरत चैलेंजिंग क्वेश्चन पे रिप्लाई है एक लड़की को, जो कि जाकिर नाइक से ये पूछती है कि हम कोई भी रिलीजन क्यों नहीं फॉलो कर लेते, इस्लाम ही क्यों या क्रिश्चियनिटी ही क्यों या हिंदुइज्म ही क्यों। तो जो दिल करे हमारा, सारे मजहब हमें इंसानियत ही सिखाते हैं और अपने खुदा से जुड़ने का एक पाथ बताते हैं। तो हम कोई भी रिलीजन क्यों नहीं फॉलो व्हाई शुड करते? वी फॉलो एनी रिलीजन ना? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। हमारे तो माइंड में क्वेश्चन भी नहीं आता है। बिल्कुल है, हम तो मुसलमान हैं। हमारा तो बिलीव यही है कि हमने सिर्फ दो चीज़ों को लेके चलना है, अल्लाह और इसके रसूल को, बेशक। और कुरान मजीद को हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि वो लड़की है, वो क्वेश्चन कर रही है बेसिकली कि हम किस रिलीजन क्यों फॉलो करें। जैसे कि अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो करें, अगर वो लेट्स सपोज जाकिर नाइक उसको कह रहे हैं कि भाई इस्लाम को फॉलो करो, तो इस्लाम जो सा एक बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल रिलीजन है, जिसमें एक मुकम्मल दीन है, मुकम्मल दीन है, मुकम्मल किताब हम लोगों को दी गई है, जिसमें हर चीज़ के जो उनसे हैं वो आंसर्स गिवन है ऑलरेडी। तो बस एक सिंपल सा रास्ता है, उसी के ऊपर हमने चलना है। इतना कोई टफ नहीं है हमारा दीन, सिंपल है, उसको लेके चलना है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बी विद अस। Good evening, everybody. I'm Aarti. I'm an engineering student. I believe that most religions are just a set of beliefs. Hinduism is a belief, Islam is a belief, Christianity is a belief, and most major religions like the Islam or the Hinduism or the Christianity have been formed through ages. They have come past through a lot of ages. So they can be a lot of additions and subtractions which can add value to the religion and which can also cause some kind of demolition to the name of the religion itself. So my question is, why do we have to stick on to few religious books like the Quran or the Vedas to follow a life of our own? Why can't we just take the rights, the positives and the negatives, and leave the negatives alone, and take the positives of the Quran and take the positives of the Vedas alone, and lead a life of good? And no matter what, for example, no matter what the Vedas say or no matter what the Quran says, I believe that a man should have a single wife. And I would definitely not agree upon the fact that the Vedas contain something like that or the Quran contains something like that. It is up to my conscience to leave off the negatives of however great a religious book might be and take the positives of the book alone. And why are we here to even discuss about why are we here to even discuss about the differences and similarities between the two great religions? Why can't we just take the positives of both religions and just lead a life of our own? That's my question. Sisters asked a very good question. A very good question, a very relevant question. That why should we follow religion? Why Hinduism, why Islam, why Christianity? Why not follow the good things of all? And that's it. Finished. Who will decide what is good, what is bad? For example, in America, wearing skirts and shorts is common. Western country, it is modest. So for there, wearing skirts and shorts is modest. If you wear in Chennai, if a girl walks on the streets with shorts and skirts, you will call it immodest, including you, sister. Even you say she is immodest. Even Pakistani. So what is modest in America is not modest here. When I went to America a few years back, there was a person who told me that you Indian women, you are immodest. I was shocked. Why? How come Indian women are modest? Because when you wear the sari, you show your belly. So for the American, the woman showing the belly is immodest. So who will decide? If you go to certain Muslim countries, the Arab countries, looking at a woman, staring at a woman is immodest. Here, as long as you don't touch a woman, you can talk to her, you can look at her, it's modest. Therefore, when you greet, the Indian, they say namaste without touching. In the Western countries, it is common that you shake hands. So shaking hands between a lady and a man is modesty. As long as you shake hand and don't touch any other part of the body, in some Western countries it is modest. In other Western countries, kissing a woman on the lips and the cheek is modest. In some Western countries, you can do what you want, the male and the female, as long as you do willingly, it is modest. Who will decide? Who will decide? Who will decide? If you go to America, there are nude beaches. There was a ship I read in the Times of India 2 months back, a nude cruise. Nude. Everyone in the ship will be nude. For them it is modest. Who will decide? The best person to decide is the Creator, sister. Now I am asking you, who will decide what is right, what is wrong? Who will decide? And if you say that select the best, I am with you. I agree with you, sister. Select the best of all the religions.
So that's what I've done. I've selected the best from the Vedas. But what is best is not best for you. That's the problem. I'll discuss that also. I challenge any human being to point out a single principle of Islam which is against humanity as a whole. Single. एज अ मुस्लिम हम पे चैलेंज करते हैं I challenge, I say, I'm not speaking on behalf of the other Muslims. I'm putting my head on the guillotine. I challenge anyone. Yes, they may be non-Muslim, may think certain thing is wrong. For example, the sister disagrees with a man having more than one wife. I'll discuss that, inshallah. concept से ना After I give you the answer, you'll be convinced, inshallah, God willing. You'll be convinced. For example, if you ask a problem, 2 plus 2 is how much? If you don't know the answer, I'll give you the answer. Now, once you know the answer, you get convinced. So what do you have to discuss, sister? The things which you don't agree, you can come on the microphone and tell me, I am just a student. I'll try my level best with Allah's help to try and reply. Now, though the Vedas say you can marry more than one wife, the Christian Bible says, the Quran says. Now, you don't believe in all of them, no problem. Let's talk about logic. Sister, do you know, by nature, male and female are born in equal proportion? By nature, male and female are born in equal proportion. But if you ask any pediatrician, a doctor of the children, he will tell you that the female child can fight the germs and diseases better than the male child. So in the pediatric age itself, there are more male children dying as compared to female children. So in pediatric age itself, there are more females than the males. As life goes on, death due to cigarette smoking, death due to alcoholism, death due to accident, death due to war, more male are dying as compared to female. So today in the world, there are millions of women more in the world as compared to male. Only in some countries, third world countries like India, the female population is less than the male population. You know why? Because of female infanticide. According to a BBC report, according to Emily Beckonin, on the program Let Her Die, the topic was assignment. Every day, more than 3,000 fetuses are being aborted in India after they identified that they're females. That means more than 1 million fetuses are being aborted in India every year after they identified the females. If you stop this evil practice, and according to Tamil Nadu Government Hospital report, this state of yours, that report says out of 10 female born alive, 4 are put to death. Do you say it is right? Sad news. It is wrong. If you stop this evil practice, even in India, the female population will become more than the male population. In America alone, there are 7.8 million females more than male. In UK alone, there are 4 million female more than male. In Germany alone, there are 5 million female more than male. In Russia alone, there are 9 million female more than male. God alone knows how many millions of females are more than males in the world. Suppose, sister, hypothetical question. Suppose my sister happens to live in America. Or suppose your sister happens to live in America, USA. And the market is saturated. Every man has found a woman for himself. Yet, there will be 7.8 million females who will not find life partners. Now, only option remaining for them, for these females who have got no life partner, is that either marry a man who already has a wife or become public property. You may say, public property? Brother Zakir, such a harsh word. Sister, it is the most sophisticated word I can use. I cannot use a better word. In America, on average, the statistics tell us a person has 8 different sexual partners before you settle down with one. Mistresses is common. You can have 10, 20, 30, no problem. 100 also. The law will not say anything. If you marry more than one wife, that thing doesn't go down their throat. Why? In mistresses, the woman does not get a right. She's degraded. She's dishonored. In Islam, when you have a second wife, you have to give equal rights. She has the honor. She has respect. But I do agree with you, sister. I agree with you that no woman under normal circumstances would like to share a husband with any other woman. I agree with you. I agree with you, sister. But the basic law of the Islamic Sharia is let a small loss take place to prevent a big loss. With let a small loss take place to prevent a big loss. So all the Muslim women who know that there are millions of women, if they would not allow their husband to have more than one wife, they will become public property. They say, we would not mind sharing a husband to prevent our other sisters to become public property. Hope that answers the question. So guys, ये थी आज की वीडियो जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा तरीके से जवाब दिया, जो कि
गर्ल जो सी है वो कम्प्लीटली तौर पे आई बिलीव वो अंडरस्टैंड कर गई होगी। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है कि इस्लाम जो सा है वो कितना प्यारा जो सा है रिलीजन रिलीजन है। और इस्लाम के जो शरिया लॉ होते हैं, वो लड़की एक हिंदू थी, उसको नहीं पता कि उनके पीछे क्या लॉजिक्स क्या होती है logics और होती क्या है। अल्लाह पाक की मतलब रजा होती है शरिया लॉ जो बिल्कुल। बनते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए एक सर्कल बना दी है इस्लाम एज अ मोमिन, हमने उसके अंदर ही रहना है, उसके मुताबिक लिविंग अपनी और स्टार्ट करनी है। जैसे कि अहमद भाई कह रहे हैं कि लिविंग स्टार्ट करनी है, और अगर कोई लाइक मेल है वो अगर तो वो इक्वली जो सा है चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता बिल्कुल। है तो, और जो सा इक्वली राइट्स जो सा है वुमेन को दे सकता है तो, और अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है तो वो दो एक से ज़्यादा शादी कर कर सकता है। सकता है। अगर और अफोर्ड नहीं कर सकता तो देन ही शुड गो विद ओनली वन। और परमिशन जो है अपनी वाइफ की भी वो लेना बहुत ज़रूरी लाजमी है। जरूरी है। इस तरह पाकिस्तानी कल्चर में समाउ होता भी है और इंडियन कल्चर में तो नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में है कि जोर जबरदस्ती से या अपनी मैरिज लाइफ से वो हैप्पी भी नहीं होगा इवन के बंदा तो दूसरी खाना शादी में कर आके लेगा। भी लोग दूसरी शादी कर देते हैं तो। और जैसा कि माउथ शटिंग रिप्लाई था उसको कि इंडिया में सिर्फ ऐसी कंट्री है जहाँ पे औरतों की जो पॉपुलेशन है वो बॉयज से कम है। कम और वो क्यों है? क्योंकि उधर गर्ल्स जो है पैदा होने पे वो ज्यादा खुश नहीं होते। हमारे लिए तो एज अ बिल्कुल वो मोमिन एज अ रहमत होती है बेटी, तो ऐसे हम लोग बड़ा खुशी से सेलिब्रेट भी करते हैं चाहे बहुत बेटी की पैदाइश हो या बेटे की। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में अबॉर्शन ही करवा लेते हैं हिंदू ज्यादा लड़की बहुत की सारे वजह ऐसे से। विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे वो मतलब कि डर के उसको दफना ही देते हैं दफना ना। भी देते हैं आफ्टर बोर्न, और कुछ तो हैप्पी नहीं अबॉर्शंस होते वो, करवा लेते हैं बेसिकली ना। हैप्पी नहीं होते औरत की बच्ची की पैदाइश है ना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुसलमानों में तो सेलिब्रेट की, लेकिन इज्जत है। पाकिस्तान में भी कल्चर पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो सिमिलर तो है ना। सिमिलर है काफी सारी और चीजें। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे इस चीज को मतलब नैरो माइंड होके नैरो माइंड या होके नेगेटिव नेगेटिव थॉट समझा से जाता देखा है और जाता है। उसको अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन लेकिन जाकिर नाइक के एक नॉलेज पे देखा है उन्होंने किस तरह से टैकल किया है उस बिल्कुल लड़की के आंसर को, और इतना खूबसूरत सा रिप्लाई किया उसको कि क्यों एक मर्द को एक से दो शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हम सब भी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी औरतों की जो तादाद है वो ऑलरेडी एक्सीड है सही मर्दों से। है। मर्द जो होते हैं जंगों में भी मारे जाते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंटल ऐसे डेथ्स भी मर्दों की ज्यादा होती हैं। मर्द काम करता है, उसकी मौत मेहनत किसी करता भी है। वक्त हो सकती है किसी और रीजन से। तो जंगों के बाद भी समहाउ बच्चों को छोड़ देते हैं, औरतों को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ना पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो मर्द है कम है और औरतें औरतें ज्यादा। से और एक ज्यादा बड़ा है। लॉजिकल सा जवाब दिए, शरिया में ये जवाब नहीं है। शरिया में तो बस कह दिए कि एक बिल्कुल मर्द 4 वाइफ्स कर सकता है, लेकिन उन्होंने लॉजिकल आंसर दिया प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके उस तरह से चला जाता है। बिल्कुल। इक्वली राइट्स देने चाहिए। तो गाइस जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से जवाब दिया गया, और ये थी आज की वीडियो जिसके ऊपर हमने रेट किया है। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इससे कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज सीख होगा। अगर हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अगर जो उनसे हैं वो वाइफ को है अगर एक से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो कंडीशंस भी हैं एक्चुअली में ना कंडीशंस वगैरह शरिया कौन सी लॉ हैं में, मुसलमानों को उसको फॉलो फॉलो जरूर करना करेंगे चाहिए। और उसको लेके चलेंगे। तो गाइस So, प्लीज़ हमारी जो है वीडियो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और और शेयर करते शेयर हैं। भी आगे किया और करें, हमें कमेंट्स भी किया करें कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएं। इस पे बनाएं। और सो गाइस ये था आज का रिएक्शन, हमें होपफुली बताना हमारा आपको रिएक्शन अच्छा जरूर लगा होगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।